हेलो। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। अच्छा, अभी भी ये कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास अभी 1 मिनट है, हमें 10 बजे से स्टार्ट करना है। चलिए 10 बज गए। तो देखिए, कल मैंने आपको ये दिखाया था, हमने इसको देखा था, that countably infinite intersection of open and dense sets in its general metric space, it need not be dense। इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट करी थी। हमने देखा था these ANs are open and dense but their intersection is empty। ठीक, ये कल वाले वीडियो में आपको मिलेगा ये। ठीक, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसा कि मैंने कल ही आपसे कहा था कि it then becomes interesting to know under what additional conditions this comes out to be true। मतलब if you want countably infinite intersection of open and dense sets to be dense, then what additional assumptions you must take into consideration। आज हम इसी को आंसर करेंगे एंड इट इज रिलेटेड टू बियर स्पेसेस। इनफैक्ट ये मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ यू आर इन अ बियर स्पेस। मतलब ये खाली बियर स्पेसेस में होता है। तो दैट मीन्स जहां ये नहीं होता है, मतलब जहां काउंटेबली इन्फिनिट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड डेंस इज नॉट डेंस, वो स्पेस फिर बियर स्पेस नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स चूंकि यहाँ आपका ये काउंटेबली इन्फिनिट इंटरसेक्शन एम्प्टी आया था, सो दैट मीन्स क्यू विद the restriction of usual metric to Q is not a Baire space। ठीक है। आज हम इसको कोशिश करेंगे इसको कंक्लूड करने की। सबसे पहले आप यही जो मैं आपसे कह रहा था, इसी को आप रिकॉर्ड करिए एज अ थियरम। लेट xt be a metric space then this xt is a Baire space if and only if and only if every countable intersection, when I say every, इसमें फिर काउंटेबली इन्फिनिट भी आता है। वैसे फाइनाइट केस में तो काउंटेबल मींस इधर फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनिट। फाइनाइट केस में तो कोई मसला नहीं है। इफ यू टेक फाइनाइटली मेनी ओपन एंड डेंस सेट्स, उनका जो इंटरसेक्शन होगा इट विल बी डेंस। फाइनाइट केस में हाँ प्रॉब्लम आती है व्हेन यू गो टू द काउंटेबली इन्फिनिट केस। काउंटेबली इन्फिनिट केस में इन जनरल इट नीड नॉट बी डेंस। ठीक, बट इन बियर स्पेसेस काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ countably infinite intersection of open and dense sets is again dense। every countable intersection of open and dense sets in XD is dense in XD।
let's try to prove this. Proof. First we'll assume that X3 is a Baire space, और मैं आपको दिखाऊंगा कि that every countable intersection of open and dense must be dense in X3. Assume X3 is a Baire space and let an running from 1 to infinity be a sequence of open and dense sets in XT. ठीक? It's a sequence of open and dense sets in XT. Stop. We shall show. मैं आपको दिखाऊंगा this intersection n runs from 1 to infinity a sub n. मैं आपको दिखाऊंगा कि that this is dense in XT. Full stop. To this end, let capital O be a non-empty open set in XT. देखिए हमने कल ना एक denseness के लिए हमने एक criteria obtain किया था. We know that a set is dense if and only if it intersects every non-empty open set. हम basically उसी criteria की मदद से दिखाएंगे कि that this intersection of ANs is dense in XT. इसीलिए मैं एक open set ले रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ this O is open and non-empty. Full stop. Now we claim that this is my claim. Intersection n runs from 1 to infinity a sub n intersected with O. मेरा claim ये है कि that this is non-empty. सब रखिए स्टार. Now for if, चूंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? For if this is not the case, फिर क्या होगा? Then it will be empty. Intersection n runs from 1 to infinity an. It must be what? Intersected with O. It must be empty. Full stop. आपको आवाज मेरी ये क्लियर आ रही है क्या? इसमें कुछ पीछे से कुछ शोर आ रहा है? हेलो, क्लियर आ रही है सर. चलिए फिर ठीक है. अगर कुछ इसमें आपको ये शोर और महसूस हो तो मुझे बताइएगा. and therefore अब अगर ये empty है तो इसका complement क्या होगा? It will be whole x, right? Therefore
एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, वो आप कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. सो दिस विल बी ओ कॉम्प्लीमेंट union, then union n runs from 1 to infinity a n complement, and this will be whole x. ठीक है, फुल स्टॉप. thus अब आप ये देखिए o इट्स इक्वल o intersected with x, है ना, बिकॉज x इज द यूनिवर्सल सेट. अब आप यहाँ क्या करिए, x की जगह आप ये लिखिए, बिकॉज ऊपर आप ऑब्टेन कर रहे हैं ना x इज दिस. सो o विल बी इक्वल o intersected with, अब x की जगह हम ये लिखेंगे, ये जो सेट है यहाँ will be o complement, then union n runs from 1 to infinity a n complement. ठीक. So what will be this? This will be further equal. अब यहाँ distributed ये आप इस्तेमाल करेंगे, distribute this intersection over this union, over these unions actually. So आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा O intersected with O complement सबसे पहले, which is empty, right? उसके बाद union, then you distribute this intersection over these unions, so वहाँ आपको ये मिलेगा union with union n runs from 1 to infinity O intersected with a n complements. ठीक है. Now this is, ये तो phi है, so this is union n runs from 1 to infinity O intersected with a n complements. ठीक, full stop. Since what you know about ans are open and dense. इसको कोई लेबल दीजिएगा, let's say double star. Since ans are open and dense, it follows an complements क्या होंगे फिर ये, और कल मैंने आपको दिखाया था ये complement of an open and dense set is No variance. so an complements are no variance. ठीक, and consequently from double star it then follows that capital O is a first category set. बताइए कैसे. What is double star? Double star में आप कह रहे हैं कि that O is equal to this countable union. अब यहाँ से कैसे follow ये होगा कि that capital O is a first category set. इसका रीजन असल में ये है, जो ये सेट आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, इट्स अ सबसेट ऑफ an complement, है या नहीं, बिकॉज an complement appears in the intersection. So it's a subset of an complement. An complements are nowhere dense, so these are subsets of nowhere dense sets. ठीक, and we know that a subset of a nowhere dense set is itself nowhere dense. So these sets जो यहाँ union में appear हो रहे हैं, they are nowhere dense. ठीक, so this is countable union of nowhere dense sets, and a set which can be written as a countable union of nowhere dense is a first category set. So that means O is a first category set, but this is a contradiction, which is a contradiction. बताइए कैसे है contradiction. हाँ बताइए, ये किस तरह से contradiction है.
देखिए आप कहां पर है, यू आर इन अ बेयर स्पेस, और बेयर स्पेसेस में क्या होता है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स जो होता है दे आर ऑफ सेकंड कैटेगरी. नाउ व्हाट इज ओ? ओ इज non empty and open, so this must be of second category. Second category means not of first category, so A should not be, rather it must not be of first category, but नीचे आप देख रहे हैं कि it's of first category, so therefore we have a contradiction. ठीक, और ये contradiction क्यों आई आपको? Because you went against the claim in star, so claim in star is established. This establishes the claim in star, and therefore what? This intersection has to be non-empty. Intersection is non-empty means this set जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, it intersects O. What's O? O is an arbitrary chosen non-empty open set, so that means this set, it intersects every non-empty open set, so therefore it has to be dense, and therefore intersection n runs from 1 to infinity, an must be dense. तो अब आप देख रहे हैं कि in a Baire space countably infinite intersection of open and dense is dense. ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्स भी दिखाना है, बस दिस इज इफ एंड ओनली इफ थ्योरम. ठीक, तो हम अब अस्यूम क्या करेंगे, विल अस्यूम Xg is a metric space wherein every countable intersection of open and dense is dense, और हम दिखाएंगे कि that Xg then must be a Baire space. किसी और कलर में लिखेंगे. Conversely, assume Xd is a metric space wherein every countable intersection of open and dense sets is dense. Full stop. We shall show, हम दिखाएंगे Xd must be a Baire space. ठीक ना, बिफोर आई परस्यू दिस कन्वर्स पार्ट, मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, इसको ट्राई करेंगे आप. एक्सरसाइज ये है, लेट Xd be a metric space and A contained in X be closed in Xd. Stop. Show that. आपको दिखाना है कि A कोई ऑर्डिनरी सबसेट नहीं है, इट इज क्लोज्ड, और आपको दिखाना है कि दैट A माइनस द इंटीरियर ऑफ A, दिस इज नोवेयर टेंस. कहने का मतलब यह है कि बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज नोवेयर टेंस. Because A minus interior A is basically the boundary of A. ठीक है, ये आप दिखाने की कोशिश करिएगा. ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं, यू कैन इजीली शो दिस.
से अब ट्राई करेंगे। अब वापस यहाँ आइए, तो हमारी assumption ये रहेगी इसमें that every countable intersection of open and dense sets is dense and will show that this XT must be a Baire space। अब ये करने के लिए आप क्या करिए, stop to do so, इसी वापस इसी कलर में लिखेंगे। To do so, let capital O be, या कुछ और लेंगे अभी क्योंकि कैपिटल O हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है ना ऊपर। लेट्स टेक समथिंग एल्स, लेट कैपिटल V be अब देखिएगा मैं कैसे इसको करूंगा। So I'll take capital V as a first category, so for us capital V will be a first category open set in XD। ठीक है, this capital V is what, it's a first category open set। अगर ये first category है तो you must be then able to write this capital V as a countable union of nowhere dense sets। Then we can write this capital V as union n runs from 1 to infinity Vn, और ये Vn's क्या होंगे, where Vn's are what, nowhere dense। ठीक, full stop। इसके बाद observe that x is equal, ये ध्यान से देखेंगे आप, v complement union, then union n runs from 1 to infinity Vn closure। क्या ये सही है? इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये देखेंगे ना यहाँ पर, ये वाला जो यूनियन आप देख रहे हैं, इट इज द यूनियन ऑफ क्लोजर्स ऑफ Vn एंड वी नो दैट क्लोजर इज अ सुपरसेट ऑफ द सेट, मतलब एक इज कंटेनर इन ए क्लोजर। ठीक, सो Vn क्लोजर इज अ सुपरसेट ऑफ Vn, सो दैट इज द रीजन ये जो यूनियन आप यहाँ देख रहे हैं, दिस कंटेन्स, ये जो यूनियन है इट कंटेन्स V कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ Vn's, है ना, because Vn closures are bigger sets than Vn's. So this union contains this union. And what is this union? This is V complement. And what is union of Vn's? It's V. So this is V complement union V. V complement union V is X. So this set contains X. But chunki X is the universal set in these situations. So therefore this must be X. So this is X. Okay. Full stop। इसके बाद क्या करिए, for each n in the set, ये ध्यान से देखेंगे आप, 0 1 2 so on, so n takes values in this set। हालांकि ये चूंकि यहाँ आपका n, let's take something else, let's take k, for each k in this, we define
देखिए क्या डिफाइन हम करेंगे, वी डिफाइन एफ सब की, ये एफ सब की क्या होगा, इट विल बी इक्वल, इट विल बी डिफाइंड एज, इट विल बी v complement if k is 0. So f sub 0 is v complement and it will be vn closure for k equal to 1, 2, 3, so. तो बेसिकली ये जो सेट्स आप इस डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं ना, इन्हीं को हम ना एक तरह से इंडेक्सिंग कर रहे हैं इन सेट्स की, एफ सब केस. देन these f sub keys are closed. क्या ये सही है? Obviously they are closed, क्योंकि यहाँ से जो सेट्स आप देख रहे हैं v enclosures, they are already closed. What about v complement? V complement चूंकि v is open, so v complement is closed. So these are closed in xt. Full stop. ठीक है? They are closed in xt. In fact वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, वो ये decomposition, इसको आप in terms of f keys ऐसे लिख सकते हैं. And मैं इस डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ. इन टर्म्स ऑफ एफ केज हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एंड x इज इक्वल यूनियन k runs from 0 to infinity f sub k. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, if e sub k be defined as f sub k minus the interior of f sub k for k equal to 0, 1, 2, so on, then में से मुझे कोई बता सकता है अब ये ई सब कीज क्या होंगे? देन ई सब कीज आर, nowhere dense. देयर मस्ट बी नो वेटेंस. ठीक, और इनमें एक और चीज भी होगी, ये खाली नोवेयर डेंस ही नहीं होंगे, इनमें एक और चीज भी होगी, एक क्लोज्ड भी होंगे. नोवेयर डेंस एंड क्लोज्ड इन xt. ये आप देख सकते हैं कैसे, सिंपल रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. अगर आप ये डिफरेंस को लिखेंगे एज इंटरसेक्शन, सो इट विल बी f sub k intersected with interior f sub k complement, right? f sub k is a closed set, ये हमने ऊपर देखा अभी. The interior of a set is open and complement of open is closed, so this set is also closed. So this is intersection of two closed sets, and finite intersection of closed sets is a closed set, so therefore this whole thing is a closed set. That means e sub k is closed. So e sub k's are nowhere dense and closed. ठीक है? Full stop. Consequently, अगर आप इनके कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, ई सब की कॉम्प्लीमेंट्स ये क्या होंगे? आर, ई सब keys are closed and complement of a closed set is open, so they are open and, और क्या होंगे ये? Dense. मैंने आपको दिखाया ना, complement of a nowhere dense is dense, so they are open and dense.
अब जो हमारी एजम्पशन है ना, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हमारी एजम्पशन क्या है ऊपर। वी नो दैट एवरी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड डेंस सेट्स इज डेंस। अभी तक हमारे पास यहाँ कोई ऐसी कलेक्शन नहीं थी ओपन एंड डेंस सेट्स की, अब वो आ गई है, तो वी कैन एक्सप्लॉइट दिस assumption। तो क्या मिलेगा आपको? therefore by our assumption it follows, बताइए क्या मिलेगा? हमें ये मिलना चाहिए इंटरसेक्शन k runs from 0 to infinity e sub k complement is dense in xt। ठीक है, so this must be dense in xt। अब इसके बाद आप ये देखें, ऑब्जर्व दैट, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होने जा रही है एज फार एज द प्रूफ इज कंसर्न। ऑब्जर्व दैट, क्योंकि आसान है बट इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए। इफ यू टेक this, if you take the union n runs from sorry, not n, k runs from 0 to infinity, interior f sub k। ये जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये जो f sub केस है आपके, इन्हीं f sub केस का आपको इंटीरियर लेना है, एंड देन यू नीड टू टेक द यूनियन ऑफ ऑल दोज इंटीरियर्स। और मैं आप चाहता हूं कि आप इसे देखें कि दैट इट्स कंटेन्ड इन आप इसे लेंगे नहीं, आई टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें है ना ऊपर ये मुझे बेसिकली इसको किसी तरह से इन्वॉल्व करना है। और यहाँ जो इंटीरियर्स आ रहा है एफ सब केस के, वो बेसिकली आ रहा है एज इंटरसेक्शन, मतलब अगर आप इसे देखेंगे एज इंटरसेक्शन, दिस इज एफ सब के इंटरसेक्टेड विद इंटीरियर एफ सब के कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली इंटीरियर एफ सब के इसके कॉम्प्लीमेंट्स को मुझे इन्वॉल्व करना है। So I'll take the complement of this union. I won't take the union, I'll take the complement of this union. ठीक, this is first, in the first place this must be equal what should I do, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this is x
माइनस, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, सो देयरफॉर इट इज x माइनस यूनियन k runs from 0 to infinity इंटीरियर f sub k। क्या ये सही है? अब देखिए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। तो आप यूनिवर्सल सेट से आप ये काट रहे हैं, तो वहां जो रहेगा इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक, सो दिस एंड दिस दे आर इक्वल। नाउ व्हाट इज x? x के लिए हमारे पास डिकम्पोजिशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ f sub k's, तो मैं वही अब यहाँ लिखूंगा। दिस इज इक्वल यूनियन k runs from 0 to infinity f sub k, right? Then what? Then minus union k runs from 0 to infinity interior of f sub k। ठीक, and this is equal, पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this is equal to union k runs from 0 to infinity f sub k। इसको पहले आप एज अ होल देखिए, मतलब इसको आप एज अ सिंगल एंटिटी देखिए। अब ये जो है डिफरेंस, इसको आप लिखिए इंटरसेक्शन union k runs from 0 to infinity interior f sub k। ठीक, अब आप क्या, सॉरी नॉट, दिस इज डिफरेंस, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, तो ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करिए आप इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करिए और दिस यूनियन, सो दिस इज इक्वल यूनियन k runs from 0 to infinity f sub n। ठीक, इंटरसेक्टेड विद, ये ध्यान से आप देखेंगे, union k runs from 0 to infinity interior f sub। तो बेसिकली आप यहाँ क्या करें, चूंकि आपको पता है इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट मीन एक्चुअली द सेट थ्योरेटिकल डिफरेंस, तो दिस इज एक्चुअली f sub n माइनस दिस। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जो मैं सेट लिखने जा रहा हूँ उस सेट और इस सेट में क्या रिलेशन फिर यहाँ पर f sub होगी। n है या f sub k? ओ सॉरी सॉरी, f sub k, sorry, this is f sub k। यहाँ पे f sub k, क्योंकि k इज और ये जो है ना, इसका जो इंडेक्सिंग इज डन बाय k, सो इट्स k ऊपर, बस ये यही इन्हीं दो स्टेप्स में हुआ था। दिस इज f sub k। ठीक, अब आप इसे देखिए, f sub k intersected with interior f sub k। आप क्या करिए, सबसे पहले आप इस सेट और इस सेट को कंपेयर करिए और मुझे बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है। यहां देखिए आप f sub k से क्या निकाल रहे हैं, आप ये पूरा यूनियन निकाल रहे हैं, वेयरएज यहां आप f sub k से क्या निकाल रहे हो, बस मैंने आपसे पहले ही कहा a इंटरसेक्टेड विद b कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली a माइनस b, मतलब इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली द डिफरेंस। तो यहाँ भी है ना इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ आपने क्या निकालना है यहाँ पर, ये पूरा यूनियन, वेयरएज यहाँ
इंटीरियर एफ सब के कॉम्प्लीमेंट मतलब वन ऑफ द सेट्स इन द यूनियन। यहाँ पूरा यूनियन बाहर जा रहा है एफ सब के से और यहाँ कोई एक सेट। So what will be the relationship between this set and this set? Obviously, this will be a smaller set and this will be a bigger set. So that is the reason this union is contained in this union. ठीक है? Now this is further equaled. अब यहाँ देखिए, what is this? This is union. K runs from 0 to infinity. What is this? This is actually f sub k minus interior f sub k, and that is a sub k. ठीक है ना? So क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि that the complement of this union is contained in union of e sub k's. ठीक, अब आप क्या करिए, आप यू टेक कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, और कॉम्प्लीमेंट जब आप लेते हैं ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये जो इंक्लूजन है ये रिवर्स हो जाएगा। फुल स्टॉप। दिस केस ये बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा, बट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? इट विल बी इंटरसेक्शन k runs from 0 to infinity e sub k complement, and it will be contained in the complement of this set. यहाँ ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो इट विल बी द सेट जो यहाँ जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। So this is contained in union k runs from 0 to infinity interior f sub k. सही है ना? अब इस सेट के बारे में क्या जानते हैं आप? ऊपर देखिए, आपको पता है कि दिस सेट इज dense. So therefore this set becomes a superset of a dense set because this is dense, और ये इसे contain करता है, so therefore this must be dense also. Since intersection k runs from 0 to infinity, e sub k complement is dense, it follows what? It follows union k runs from 0 to infinity interior f sub k. This अभी नहीं लिखिएगा, अभी आप देखेंगे। This is dense in xt. ठीक। Now what is this union? अगर इसको खोल के लिखा जाए, this will be interior of f sub 0, then union interior of f sub 1, union interior of f sub 2, union, so on, right? What is f sub 0? वो ऊपर आप देखेंगे, f sub 0 is v complement, so interior f sub 0 is basically interior of v complement, so therefore it is interior of v complement. Then union, what is this? F sub 1, we know that f sub k for k equal to 1, 2, so on, is what? It is v sub k closure. तो interior f sub 1 क्या होगा? It will be interior of v sub 1 closure, then union interior of v sub 2 closure, then union, so on. अब मुझे आप बता सकते ये जो सेट्स है इंटीरियर v sub 1 क्लोजर, इंटीरियर v sub 2 क्लोजर, ये किसके बराबर है? आपके v sub k's क्या है ऊपर आप देखिए, या v sub n's क्या है आपके? where n runs from 1 to infinity, you know that they are nowhere dense. If they are nowhere dense, it means what? It means interior of v1 closure, it has to be empty. इसी तरह से v2 is also nowhere dense, so that means interior
of V2 closure is also empty and so on. So that means जो नीचे आप ये यूनियन देख रहे हैं ना उसमें पहले सेट को छोड़ के जो बाकी सारे सेट्स है दे आर ऑल एम्प्टी बिकॉज जो आपके ये वीक केस है k equal to 1 to infinity they are nowhere dense. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट ये सारे एम्प्टी है तो इसमें खाली क्या रहेगा इंटीरियर ऑफ V कॉम्प्लीमेंट. ठीक मैं यही यहाँ लिखने जा रहा हूँ बिकॉज ये जो पूरा यूनियन है इट रिड्यूसेस टू इंटीरियर V कॉम्प्लीमेंट. इंटीरियर ऑफ V complement is dense in XT. या इसी के साथ यहाँ लिखिए ये फुल स्टॉप काटिए आप. एंड देयरफॉर अगर इंटीरियर ऑफ V कॉम्प्लीमेंट डेंस है तो देयरफॉर V कॉम्प्लीमेंट भी डेंस होगा. V कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन XT. ठीक है ना. और इसका रीजन क्या है इसका प्लेन रीजन ये है बिकॉज V कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स इंटीरियर ऑफ V कॉम्प्लीमेंट. और अगर इंटीरियर V कॉम्प्लीमेंट टेंस है तो इसका सुपर सेट भी टेंस होगा तो V कॉम्प्लीमेंट भी फिर टेंस होगा. ठीक है. सो दिस V कॉम्प्लीमेंट इज dense in XD. Consequently, जो V है it has to be empty. ये बताइए कैसे. आप चीजें रिकलेक्ट करिए अपनी नोटबुक में. आप देखिए अगर आप ये चीजें लिख रहे हैं आप V आपने कैसे लिया था. आपने V में आपने एक चीज भी मानी की थी. आपने माना था कि V इज ओपन. वहां हमने कुछ और भी लिया है रिगार्डिंग दिस V लेकिन वहां एक ये चीज ये भी है. आप मान रहे हैं कि दैट V इज इट्स ओपन. हम बेसिकली हमारा कि इट्स फर्स्ट कैटेगरी एज वेल एज ओपन. फिलहाल हम ये ओपननेस को देखेंगे क्योंकि V ओपन है ना. ये हमारी एजम्पशन है. अगर ये अब V नॉन एम्प्टी भी होगा और चूंकि आपका V कॉम्प्लीमेंट डेंस है एंड वी नो दैट अ डेंस सेट इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट so then it must intersect this V also. अगर V non empty है ना then V complement must intersect V. So that means आपको फिर ये मिलना चाहिए V complement intersected with V is non empty. लेकिन ये possible नहीं है. ये possible नहीं है means ये possible नहीं है. So means V cannot be non empty. So V has to be empty. ठीक है. So let's summarize this. देखिए हमने क्या obtain किया. We started with what? We started with a first category open set और हम देख रहे हैं कि ये empty होना चाहिए. So that means चूंकि ये V हमने ऐसे ही लिया था basically मैं आपको दिखा रहा हूँ every first category चूंकि V was chosen arbitrarily so therefore it then follows every first category open set is empty. Since capital V was chosen arbitrarily it follows every first category open set in XT must be empty. और आप इसी के साथ लिखिए and therefore अब अगर
अगर ये हो रहा है, if every first category open set is empty, so therefore every non-empty open set must be of what? Second category. ये फर्स्ट कैटेगरी का नहीं हो सकता। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये फर्स्ट कैटेगरी का नहीं हो सकता। फर्स्ट कैटेगरी का होने का नहीं होने का मतलब है इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। ठीक है, आपने एक, आप इसको फिर से समझिए, हमने क्या किया था, हमने वी लिया था आर्बिट्रेरली, हमने इसको सिलेक्ट किया था। और कैसे लिया था हमने इसको, हमने लिया था इसको एज फर्स्ट कैटेगरी एंड ओपन, और इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि इट हैज टू बी एम्प्टी, so that means every first category open set is empty. So therefore if a set is open and non-empty, it cannot be first category, because first category and open means empty. So if it is non-empty and open, it cannot be of first category, so it has to be of second category. ठीक, so therefore every non-empty open set, rather मुझे यहाँ लिखना चाहिए था in xt must be of second category, thus, और यही है ना डेफिनेशन बेयर स्पेस की, thus xt is a Baire space. ठीक, this completes the proof. So अब we have established this result. ये आपको अब हमेशा के लिए याद रखना है that a metric space xt is a Baire space if and only if every countable intersection of open and dense sets in xt is dense in xt. ये खाली Baire spaces में होता है कि that countably infinite intersection of open and dense is dense. Non-Baire spaces में ये इसकी गारंटी नहीं है बेसिकली। वहां भी हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन नेसेसरीली अगर वो नॉन बियर स्पेस है तो नेसेसरीली एक केस ऐसा भी होगा जहां इंटरसेक्शन डेंस नहीं होगा, क्योंकि दिस थ्योरम इज इफ एंड ओनली इफ थ्योरम। नाउ वी कम टू द जो मेन असल में चीज है हमारा, जिसमें हम इंटरेस्टेड, जो असल में ना आपके सिलेबस में है, which is a Bayes category theorem. अब ये जो Bayes category theorem है, it states that, अब इसका स्टेटमेंट लिखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, मतलब आप पर्टिकुलरली फंक्शनल एनालिसिस में कुछ मैं कह सकता हूँ आप in a way you can use this theorem to prove some fundamental results in function analysis. This is very important as far as the proofs of those results are concerned. और यहाँ भी हम ना इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। इसका एक ना प्लेन सा एक स्टेटमेंट है इसका, it states that every complete space is a Baire space. ठीक, this is the statement of Bayes category theorem. Every complete space is a Baire space. अब चूंकि आपको पता है कि that R with usual metric is a complete space, so this has to be, चूंकि ये complete space है, so Bayes category theorem, by Bayes category theorem, this is a Baire space.
What about this? Q with the usual metric. This is not a Baire space ना, कल हमने देखा ना वो, this is not a Baire space. यहाँ से एक चीज निकल के आती है, वो ये है कि a subspace, because this is a subspace of this. यहाँ से हम देख रहे हैं कि a subspace of a Baire space need not be a Baire space. ठीक है? अब ये जो है this R is a Baire space, इसकी एक immediate consequence है, वो ये है R जो है is a second category set. ये मुझे बताइए कैसे. Baire spaces में आप क्या कहते हैं? Baire spaces में आप कहते हैं क्या? What is the definition of a Baire space? Every non-empty open set in equity is of second category. Is of second category. तो अगर R with usual metric Baire space है, so that means every non-empty open set in this must be of second category. In particular, R is also a non-empty open set, so R is also this R must also be of second category. So as far as this metric space is concerned, R with usual metric and this metric space, R is a second category set. That means you cannot write R as a countable union of nowhere dense sets. ये possible नहीं है. R को ऐसे नहीं लिखा जा सकता. ठीक है? आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास कितने बजे हो रही है? सर वो हो गई स्टार्ट. चलिए फिर ठीक है, आप जा सकते हैं. कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के लेक्चर के रिलेटेड?